Hello dear students, good morning. In this video, try to understand the use of do not. How to change present indefinite sentences into negative. Always remember that place do not after subject or pronoun I, you, we, they, and with third person plural number to change the sentence into negative form of present indefinite. Right? Example number 1. I forget your name. Here the subject is I. With I we have to write down do not to make it negative. I forget your name. I do not forget your name. Number 2. I believe that he is true friend. I believe that he is true friend. It is affirmative sentence. Now negative. I do not believe he is a true friend. Number 3. Affirmative sentence. We see the clown standing on his head. We see the clown standing on his head. It is affirmative. Now make negative. Negative. We do not see the clown standing on his head. Right? Next, question number 4. Affirmative sentence. You do well. Make it negative. You do well is an affirmative sentence. Now negative. You do not do well. You do not do again. You do not do well. Right? Next, number 5. Affirmative sentence. Ahmad and Abid. Ahmad and Abid play cricket. Ahmad, and it is affirmative sentence. Now negative. Ahmad and Abid do not play cricket. Number 6. I request him to kindly help me. It is affirmative sentence. Now make it negative. I do not request him to kindly help me. Another sentence. Number 7. They do well job. They do well job. It is affirmative. Now negative. They do not do well job. Right? Another sentence. Number 8. Affirmative sentence. We do our homework at night. We do our homework at night. We do not do our homework at night. Next, number 9. Affirmative sentence. You do your homework properly. You do your homework properly. You do not do your homework properly. The number 10. The boys work in haste. The boys work in haste. It is affirmative sentence. Now negative. The boys do not work in haste. अच्छी तरह याद रखिएगा. I के साथ, you के साथ, we के साथ, they के साथ, थर्ड पर्सन अगर दो हो जैसे आबिद और अहमद, जैसे चिल्ड्रेन हो, जैसे बॉयज हो, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ नेगेटिव बनाने के लिए आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है अगरचे जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. और इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डू को जुमले के शुरू में लिखेंगे. जैसे कि आई फॉरगेट
योर नेम, आई फॉरगेट योर नेम, इसका इंट्रोगेटिव आई के साथ क्या आएगा? डू आई फॉरगेट योर नेम, इट इज इंट्रोगेटिव। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो आई डू नॉट फॉरगेट योर नेम। अब आ जाइए, दे डू वेल जॉब, दे डू वेल जॉब, राइट। अब इसको अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो दे के साथ भी हेल्पिंग वर्ब डू को शुरू में लिखा जाएगा, डू दे डू वेल जॉब। और नेगेटिव, दे डू नॉट डू वेल जॉब। द बॉयज वर्क इन हेस्ट, द बॉयज वर्क इन हेस्ट। यहाँ पर आप देखें, नेगेटिव के लिए आपको बताया द बॉयज डू नॉट वर्क इन हेस्ट, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव बना होना होगा तो आपने डू को जुमले के शुरू में लिखना है, डू द बॉयज वर्क इन हेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।